by the Treasury benches that in spite of the indisposition of health of our Honorable Finance Minister, we had been persisting for the discussion on price rise. With all humilities at my command, I refute the charges because these charges are based upon unmitigated falsehood and calumnies. Since the day it was heard that our finance minister has been infected by COVID, we have been praying for her immediate recovery and recuperations. We have suggested the government that we can initiate the discussion once our finance minister will be recovered. The reply could easily be given to us. But now, without any rhyme or reason, simply the allegations have been hurling against us much to the, disrespect of the opposition, and it is simply based on a falsehood. Madam, again, we are wishing all for your recovery and wishing for your sound health, because being the finance minister of our country, you need to sustain your safe and sound health. सर, ये चर्चा बहुत समय से हो रहे हैं। मैं से भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये चर्चा में विपक्ष पक्ष बहुत सारे बात तो जरूर करते हैं। सर, मैं ये सदन में आया है ओनली टू एक्सप्रेस अवर कंसर्न फॉर द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेबड़ी कल्चर को खत्म करना चाहिए, और दूसरी तरफ सारे ट्रेजरी बेंचेस को जितने सारे भाषण यहाँ दिए गए हैं उसमें ये रेबरी कल्चर की ही बढ़वा दिया गया है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगे कि रेबरी कल्चर जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और आज की प्रधानमंत्री जी की तारीफ और एनडीए सरकार की तारीफ में जिस तरीके से सराहना करते हुए बयान पेश किए गए हैं, इसमें व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेबरी कल्चर एंड अदर कल्चर? सब I am really a little confused on it. I would like to ask very curtly and succinctly to our Honorable Finance Minister whether, as many economists have already expressed their apprehension, that country has been heading towards a stagflation, whether it is true or not. Stagflation suggests that high inflation, high unemployment, and stagnant growth. I do not know what is the view of this government. So may I request Honorable Finance Minister to dispel the apprehension expressed by renowned economists of our country. Sir, हमारे मेंबरों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, मैं दोहराना नहीं चाहते, बस मोटे मोटे तौर पे दो तीन मुद्दे में रखना चाहते हैं। एक तो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन न्यूट्रिशन। हमारे साथी कल्याण बाबू इस विषय पे बोलने का थोड़ा कोशिश किया, लेकिन समय के अभाव से नहीं बोल पाए। सर, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2022 इन फिगर्स, अराउंड 71% इंडियन कैनॉट अफोर्ड ए हेल्दी मील। जयंत सिन्हा जी थोड़ा सुन लीजिए। द रिपोर्ट फर्दर सेड दैट 17 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू डिजीजेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पुअर डाइट। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ओन फिगर्स, anemia in children and women has increased significantly between 2015-16 and 2019-21. Over 67% children are anemic in the country. PM Modi's home state of Gujarat has the highest number of anemic children at 79.7%, and 57% of women in Gujarat are anemic. For your convenience, I am simply refer the statistics. Sir, India is already suffering from a malnutrition and hunger crisis. 20 crore people do not have sufficient access to food. 1/4 of world's hungry population belongs to India, and India was ranked 101 out of 116 countries on the Global Hunger Index for 2021, a score that has been worsening for few consecutive years. So now you can easily assume how the country has been
progressing towards prosperity. That statistics simply suggest that we are really in a great trouble. Sir, medical inflation. So far as medical inflation is concerned, I would like to highlight that in 2021, India reported the highest medical inflation of 14% in Asia. According to a report prepared by Motilal Oswal Financial Services Limited, the out-of-pocket medical expenditure per hospitalization in 2021 in rural areas reached as high as 15,937 and rupees 22,031 for urban areas as per the latest National Health Profile. मेरा नहीं, सरकार की National Health Profile. In March 2022, the National Pharmaceutical Pricing Authority of India announced a 10.7% hike in the prices of over 800 essential medicine, including paracetamol and azithromycin, among others. आज बड़ा बड़ा बात होते हैं यहाँ कि आयुष्मान भारत की जयंत सिन्हा जी आपको बता दे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड के चलते 52 लाख 52 लाख मतलब 52,06,258 लोगों की मौत हुई है। अब पता कर लीजिए, आप इंटरनेशनल एरिना में बहुत घूमते हैं, अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा पद संभाले हैं, मैं आपसे जानता हूं आप बहुत बड़ा एरुडाइट पर्सन, फिर भी आप पता कर लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन ऑन इनकम बिटवीन 2013 and 2019, income from agriculture in real terms decreased by 8.9%. An analysis of SAS survey conducted by National Statistical Office show this is opposite of BJP's promise of doubling farmers' income by 2022. In 2019, on an average, the Indian farmer earns more through wages than cultivation. But now, for the last 33 months straight, rural wage growth has been declining, much to the concern of the agriculture sector. Insofar as burden of inflation is concerned, you are pleading for Atmanirbhar, but where we are existing now, that needs to be clarified. While the ruling government's anti-people, pro-corporate policies have at concurrently increasing fuel taxes with decreasing corporate taxes in 2019-20, corporate tax collection stood at 5.5 lakh crore, while fuel excise duty stood at rupees 2.4 lakh crore. The Modi government has shifted a massive part of the corporate tax burden onto consumers in 2020-2021, which is shown by the revised budget estimate. Corporate tax collection are estimated at under 4.5 lakh crore, a decrease of rupees 1 lakh crore, while fuel excise duties are estimated at rupees 3.6 lakh crores, an increase of rupees 1.2 lakh crore. This is not an isolated incident. The trend of the BJP over years has been to cut corporate tax rates, enriching their allies, while hurting the poor and middle class ordinary citizens. The net result of the pro-corporate policies to increase fuel prices and, as described before, cause economy-wide inflation that especially hurt the poor through increased food prices. सर, मैं 2-3 मुद्दा रखना चाहते हैं सर। सर, ये सदन के अंदर मान लीजिए 18/7/2020 ये एक लोकसभा में एक क्वेश्चन की रिप्लाई में सरकार ने खुद बताया, the government has constantly boasted of ease of doing business, but the finance minister herself said that in 2022 alone, $14 billion have been withdrawn from Indian equity markets by foreign portfolio investors. I would like to have a reaction from Honorable Finance Minister. The trade deficit for the period between April 2021 and March 2022 has also been estimated to widen to $192 billion. Despite the government chest thumping over 400 billion export figures, it should be remembered that widening trade deficit have caused depreciation of the value of the rupee. In turn, the same has made imports costlier, making it a vicious cycle for the citizens of the country unable to afford basic commodities. Source क्या है? PIB release.
पीआईबी रिलीज की सोर्स बता रहा हूं। लोकसभा में क्वेश्चन हुआ था 18/7/22 में, द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपीज हैज डेप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 25% सिंस द एंड ऑफ द डिसंबर। जब पहले मनमोहन सिंह के जमाने में प्राइस हमारे मुद्रा की भाव जब गिरने लगे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते थे कि आईसीयू में जा रहे हैं हिंदुस्तान की मुद्रा। अभी कहां जा रहे हैं? अभी कहां जा रहे? तो शतक लगाने में और देरी नहीं रखे। अगर शतक भी लग जाए तो आश्चर्य होने की कोई सवाल नहीं है। ये कहते हैं यहाँ बहाना बनाते हुए कि यूक्रेन रूसिया की वार, एक तो बहाना है कोविड की और एक बहाना है सारी इंडिया की छोड़ के बाहर वाले देशों में काफी इन्फ्लेशन हुए हैं। देखिए अमेरिका की बात कहे गए हैं, यहाँ अमेरिका में सिर्फ कोविड के चलते $5 ट्रिलियन कोविड के चलते खर्चा किया है। हमारा देश में खर्चा कर सकते हैं हम लोग $5 ट्रिलियन? नहीं। तो तुलना कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। हमारे जैसे हिंदुस्तान में अभी 7.01 CPI इन्फ्लेशन, आपको बता दे जयंत सिन्हा जी, ऑस्ट्रेलिया में 5.09%, आपको बता दे चाइना में 2.44%, जापान में 1.97%, मलेशिया में 2.84%। आप खुद तय कर लो। आप कोविड की और यूक्रेन रूसिया जंग की ये बहाना बनाते हुए लोगों को गुमराह ना करे तो बेहतर होगी। आपको शायद सुविधा के लिए मैं और 2-3 मुद्दा रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ग्राम दाल यूपीए की जमाने से अब इसका बढ़ोतरी हुई है 50%, अरहर दाल की बढ़ोतरी है 48%, उड़द दाल की बढ़ोतरी है 59%। कहाँ लाए? पोटैटो की बढ़ोतरी हुई है 11%, ऑनियन की बढ़ोतरी है 30%, टोमेटो की बढ़ोतरी है 56%। तो सर बात हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि कोई रास्ता कैसे निकाले जाए, हम सबको इस पे सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकार अगर इसमें आने रहे कि उनका कोई गलती नहीं है, सिर्फ प्रचार है, ये ठीक नहीं है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की नुमाइंदे होने के नाते सच को सच बताइए, हाँ को हाँ, ना को ना बताइए। इसमें चर्चा की और गरिमा बढ़ते रहेंगे। तो बात यह है कि सर आप देखिए सर, ये सब मैं नहीं सर, हमारे सर फॉर्मर नोटेड इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौशिक बासु has slammed the current government's economic management, alleging that not enough is being done for the welfare of the poor. The renowned economist also added that with India's population growing at 1.2%, annually, real GDP per capita has sunk minus 0.1% over the past 2 years. Sir, according to World Inequality Report, India stands out as a poor and very unequal country with an affluent elite. इसलिए हमारे नेता कहते हैं कि मोदी जी की सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है। यहाँ सारे लूट लिए जा रहे हैं किसी 2-3 कंपनियों ने, और बाकी हम लोग रह गए इस अंधेरे में, गरीब लोग। Where the top 10% हो गया सर, top 10% of Indian population holds 57% of the total national income, including 22% held by the top 1%, while the bottom 50% hold just 13% in 2021. It further stresses that the top 10% of Indians had about 96 times more income on average than the bottom 50%. Similarly, Oxfam International claimed that in 2021, India's top 1% owned about 77% of country's wealth. How is this possible without the support of this government? So इसलिए मैं कहता हूँ, झूठ को बोलने में आप आदी ना बनो, झूठ बोलने का आदत ना बनाओ, क्योंकि झूठ बोलते बोलते आपका आदत इस तरह हो जाएगा कि हर किसी को झूठ बोलते लगोगे। इसलिए झूठ ना बोलो, अपने आईना के सामने, शीशे के सामने खड़ा होकर देखो देश को, और लोग को गुमराह मत किया करो। यही निवेदन करते हुए मैं वित्त मंत्री से जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की इस हालत से बाहर करने के उभरने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, आप बताओ सदन के अंदर।